This is Kirtan Ministries Shravan-Kirtan Utsav talk. So we welcome you all. Om Jnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurun Militam Yena So today being Ekadasi, and we are already following. I'm confident you're also following, you all are following Damodar Vrat. Already Damodar festival is on, and we have taken lots of vows to celebrate this month of Damodar. And on the top of that, in the middle of this Damodar Vrat, is another Vrat, Ekadasi Vrat. Today is Ekadasi Vrat, Ekadasi festival. So additional vows, additional Vrat day. So what I'm going to do today, and this will go on till 10 after 7. It's another 35 minutes or so. Then, of course, I had to go for darshan of Krishna Balaram. I'm here in Vrindavan Dham Ki Jai at Krishna Balaram temple. And I'm going to be busy. So, and then, of course, next speaker will come on the scene after I am, done. Sarvabhauma Prabhu is going to be sharing with you all the Damodar-ashtak. He will recite Damodar-ashtak and explain the meaning, the purport of Damodar-ashtak, Damodar-ashtak prayers. So that is after I am done. So here you go. So what I have decided to do is share a Bhaktivinoda Thakur song that is sung on Ekadasi. Many places in Mayapur and other places, and devotees around the world, they sing this song on Ekadasi. And their song is Shuddha Bhakata Charana Renu Bhajana Anukula. Of course, I'm not going to sing. I'm just going to read out song to you. And my idea is to explain the meaning of the song, because a lot of times we do sing this mantra, that mantra, this song, this stotra, this stuti, these prayers, but we do not always understand what we are talking about or what we are reciting or even hearing. So isn't it important that we understand what we are hearing, what we are singing? So I'm going to recite or say the song, read the song, and explain briefly as possible, explain the meaning of the song. I also wanted to just tell you, as this is Ekadasi, that Srila Bhaktivinoda Thakur used to strongly recommend
to the Gaudiya Vaishnavas that on the Ekadasi day they should review the performance, their performance of seva and sadhana from last Ekadasi to the current, the present Ekadasi. Last 2 weeks, how did I perform my devotional service or even chanting, or as I said, seva and sadhana. Sadhana and seva, that includes everything that we do. Either we do sadhana, we do seva. So his recommendation is Ekadasi is the day to review the performance and take notes of the strong points, weak points, in this his performance was very well. Keep doing it, but here you need to pay attention. How you need to improve here, rectify this one. Do not commit offenses. No Vaishnava aparad or this, that, 10 aparad, 10 Vaishnava aparads. No, not 10 Vaishnava aparad. Vaishnava aparad is part of the 10 Nama aparad, and then Dhama aparad, and Siva aparad, and Sri Vigraha Aradhana aparad, and there's a whole big list of offenses we find in Nectar of Devotion, Bhakti Rasamrita Sindhu. So today is the day, according to Bhaktivinoda Thakur, to see how we performed. A side reminder or for your information, any possible transformation or execution of the will of Bhaktivinoda Thakur or recommendation of Bhaktivinoda Thakur. You review your performance. Do introspection. It's called introspection. Contemplation, introspection. Okay, so we go for the Shuddha Bhakata Charana Renu Bhajana Anukula. Bhakata Seva Parama Siddhi Prema Lati Karamula. So Bhaktivinoda Thakur is writing that the dust of lotus feet of pure devotee is favorable for your bhajan. So you should grab it. Either pada dhuli, pada jal, bhakta, bhukta, avashesh. There are some more items added in Chaitanya Charitamrita. The dust of the feet of the pure devotee, the water that has washed the lotus feet of pure devotee, and the remnants, bhakta, bhukta, avashesh, whatever they have left behind, that Mahaprasad, one should go for this
And this is very, very favorable for our life of devotion. Bhakata seva parama siddhi prema lati karamul, and service of their lotus feet. Then this is earlier could be a vapu seva, the dust of their feet and water washed their feet, or remnants, their remnants. This could be a vapu seva. But the vani seva, their instructions have to be followed, and that is bhakata seva. There's another kind of bhakata seva, shuddha bhakata seva. And he says, parama siddhi, by serving the pure devotees, nityam bhagavata sevaya. Prabhupada comments there. There are two Bhagavats. There's a Granth Bhagavat, Scripture Bhagavat, and Krishna Bhagavat. Bhagavat and serving bhaktas, serving Vishnu and serving Vaishnavas. Parama siddhi, one attains highest perfection by doing so. And not only that, he says, prema lati karamul, this is the root, or this is a janani, this is a mother of devotion, service unto the pure devotee. Madhava titi bhakata janani, bhakati janani, jatane palana kari. Okay, here you go. So Madhava tithi, as we say Vaishnav tithi. Tithi means day. This day, that day, Prathama, Dvitiya, Tritiya, Chaturthi, like that. These are tithis. We call them Vaishnav tithis. Some days are important, significant. So besides calling them Vaishnav tithi, those tithis are called also Madhava tithi. And Ekadasi or Sri Krishna Janmashtami, and like that, these are Madhav Tithis. Especially Ekadasi is Madhav Tithi, Tithi of Madhav. The day to glorify and serve Madhav. And Bhakati Janani, this is the mother of devotion. Observance of Ekadasi festival. Jatane ka palana kari, one should make extra effort, go out of his way. Jatane, make some endeavor to observe this Ekadasi. And he says, so what different things could be done on Ekadasi? That is what this song is all about. And of course, what is mentioned here is not to be done only on Ekadasi, but one could do it every day. But for Ekadasi, these are some of the recommendations. Krishna vasati, Krishna vasati, Krishna vasati, vasati bali. Parama adare vari, says Krishna vasati, where Krishna resides, you reside. You jai, and like that, Jagannath Puri Dham ki jai.
Krishna resides, Krishna has performed pastime. So Vasati Boli, you go there and reside. Or he says, Yon Parama Adare Vari, you choose, you select location, Leela Sthali of the Lord, and you go reside there and hear about those glories of the Lord or pastimes of the Lord performed in those locations. Gaura Amara Jesa Basthane Karala Brahman Arange Se Sabasthana Heribo Ami Pranai Bhakata Sange, says, wherever my Lord, Gauranga, Gauranga, or we also Krishna, wherever Gaura Krishna, Gaur Krishna has performed his pastimes, their pastimes, Karala Brahmana Range, Se Sabasthane Karala Brahmana Range. You go and wander around, or do parikrama of those places. But how to do parikrama? Pranai Bhakata Sange. Don't just wander off, but let your tour, parikrama, be guided by a loving devotee. One who knows the pastimes, one who loves the Lord and his pastimes, and of course loves Vrindavan, loves Mayapur. Let such devotee take you on a tour of, otherwise you may get into trouble. Srila Prabhupada's advice for us that never go alone or on your own, visiting this place, that place. You may end up in some Sahajiya group, or some Goswami or some Babaji will capture you, mislead you, even bewilder you. So be aware. This is very important. Yeah, even Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, he sent Jagdanand Pandit to Vrindavan. He said, stay away at safer distance from the local Brajabasis. They are at different level or whatever. Let you be guided by Rupa. So say Savasthana Heribo Ami, Pranai Bhakata Sange. Yeah, of course, Bhaktivinoda Thakur is talking in first person, that he says, all those places I would like to see. Heribo Ami. I would like to see those places. And seeing is not done with the eyes. Seeing is done with the ears. You have to hear. Show what as it is, whatever you are seeing, that needs explanation. So you need to hear to understand and actually visualize or see that. So it's very important that we go on a tour, do parikramas, pranai bhakata sange. Mridanga vadya sunite mana avasara sadayache. And he says, I always aspire to hear the mridanga vadya, this mridanga, playing a mridanga.
Sunite mana avasara sada yache. I always look forward to hear the mridanga being played. So we had to select the right kind of instruments. When there's a kirtan, Mahaprabho Kirtana, Nritya, Gita, Vaditrya. So when there is a Mahaprabhu's Kirtan, Mahaprabhu Kirtana, Nritya, there has to be dance, Nritya, Gita, song, and Vaditrya, there is instrument playing. So we have our standard instruments, and the very basic foundational instrument that we use, Gaudiya Vaishnavas use, is mridanga, and of course there's a kartal. A special mention of mridanga here by Bhaktivinoda Thakur. Gaura vihita kirtana suni anande hridaya nache. And then he says that mridanga is being played, the kartals are there. And then Gaura vihita kirtana suni. And when I see kirtan, even glorify they do a Leela Kirtan. Kirtan. The speaker or singer, he sings Leela of the Lord. And the instruments are also being played, are played while the recitation of that Leela goes on. The poetic rendering, or already, the Bengali or Sanskrit, or maybe some other languages, some the songs, or even Chaitanya Charitamrita is recited, is sung, Leela Kirtan, and this whole things of musical presentation, and the instruments are being played. And when that happens, Bhaktivinoda Thakur says, Anande hridaya nache. My heart begins dancing. I become blissed out versus spaced out. And then I'm no more spaced out. I'm blissed out. And my heart begins dancing. My heart begins dancing. Why it doesn't say my hand begins dancing or my head begins dancing? Why heart being dancing? Because that is where I reside, right? I'm a spirit soul and I'm in the heart. That's where I reside, in the heart, along with the Lord next to me. So, Anande hridaya nache, my heart begins dancing, meaning my soul begins dancing. My soul, when my soul full, the soul full, hearing happens, or as we say, when prasadam is a food for soul, right? Food for soul. So like that, the singing also, or hearing is food for soul or food for thought. Thought of whose thought? Soul's thought. Soul thinks. Soul thinks. And as soul hears, and he becomes excited and ecstatic and begins dancing. Dancing is a very nature of living
like Vrindavan is such place where bhakti begins dancing. Bhakti dances. Bhakti nratyati yatra bhakti nratyati cha. That is Vrindavan. Vrindavan is a place where bhakti dances. And Bhaktivinoda Thakur is saying, my heart begins dancing when there's a kirtan. You or whatever your Ishtadev or your deities are. When you take darshan, of course, at least that is happening with Bhaktivinoda Thakur. When he takes darshan of Yugala Murti, Yugal means two, so that is the Radha, Krishna, Radha, Madhav, or Gaur Nitai, Yugal two of them. As I take darshan, Parama Ananda Hoy. I become very, very joyful as I take darshan of the deities. Prasada seva karite hoya, sakala prapancha joy. And this is also a benefit of having deities or temple at home, or temple or brahmacharis or sannyasis. We have deities, an offering is made, Chappan Bhog, and then you could also enjoy Prasada Seva. You could take the remnants of the Lord. The Bhaktivinoda, that also Bhaktivinoda Thakur. Oh, this sak in Shanti Ekadina Shanti Pure, Prabhu Advaitere Ghare. One day, Chaitanya Mahaprabhu was at the residence of Advaita Acharya, and as Chaitanya Mahaprabhu was honoring some prasad, and it was so good, so tasty. He was relishing. And then Mahaprabhu gathered, please come here. Look, this prasad that I'm eating, honoring the Lord's saliva. Lord's saliva has been mixed with these remnants, this food, and that is why it is so sweet. It is as sweet as Krishna's own sweetness. And as one honors such prasad, sakala prapancha joy, one becomes free from samsara, repeated cycle of birth. He conquers the world, because by honoring such prasad, his senses and mind comes under control, and this is how you become victorious. Sevan mukhe hiji vado swayameva spurati adaha. You begin with the tongue, chanting and honoring prasad, and that could result in, it does result in having darshan of the Lord. You become purified and become qualified to have darshan of the Lord. This is just by prasada seva. Any one of these items is good enough. You could take, you do kirtan, and you become qualified. You take darshan of the deities, you become qualified. Bhakata seva, you become qualified, eligible
to see Krishna or ultimately go back to Krishna. So item after item are there. Then he says, I had to go faster. Jedina grihe bhajana dekhi grihe te golok bhai. And the day I organize kirtan at my home, I invite Hare Krishna devotees. And when they are all performing kirtan, of course, I am very much part of that kirtan, and mridanga is being played, and different, songs or Hare Krishna Kirtan is taking place. Then I realize that Grihete Goloka Bhai. My home has been transformed into Golok. It's not ordinary Griha, but it has become Mandir. It has become a temple. It has become abode of the Lord. Because wherever wherever my kirtan performance takes place, I appear there. And wherever Lord has appeared, that is Golok. So my home becomes Golok. Charana Sidhu Dekhiya Ganga Sukha Na Sima Pai. And then he's turning to, either Lord's lotus feet, or Lord is finally comes from the charan, right? It reaches the charan and then you collect that. So either that Charanamrit or also Ganga is also Charanamrit of the Lord. Whole Ganga is Charanamrit. Every drop of Ganga is Charanamrit. Every drop of Jamuna is Charanamrit. It is said that the Lord's kindness, the Lord is kind, seeing His children, His parts and parcels, suffering. The Lord's heart melts. And that melting of the heart begins flowing in the form of Ganga, Jamuna, Saraswati, Kaveri, Narmada, Sindhu, like that. So this is, in that sense, is also Charanamrit or Hridayamrit. Lord's kindness is flowing. And then Tulasi dekhi judaya prana madhava toshani jani. And then he turns, Bhaktivinoda Thakur is turning to Tulsi Maharani ki jai. So the glories of Tulsi are unlimited. Tulsi's position is very, very exalted. That Tulsi Krishna Prayasi Namo Namaha. Tulsi has a big position, big role to play in Lord's pastimes. And he mentions Tulsi as Madhava Toshani. Tulsi gives pleasure to Madhava, Madhava Toshani. So when I see Judaya Pran, okay, I go. Gaura Priya Saka Sevane Jivana Sarthakamani. One more time mention of Prasad. When I
relish sak, is a spinach, special Bengali preparation. Gaura Priyas is, and this preparation is very dear to Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Sak sevane jivana sarthaka mani. I consider my life has become perfect. How to attain perfection? Just eat sak. Sak sevan. Sak that has been offered to Krishna, to Gauranga. This sak is very dear to Gauranga. He has just now eaten. So now you eat as a remnant, and Jivana Sarthak, you attain perfection of your life. And finally, Bhaktivinoda Thakur concludes saying, Bhakti Vinoda Krishna Bhajane Anukula Payajaha Prati Divase Parama Sukhe Svikara Karayetaha. Says Bhaktivinoda Thakur, whatever is favorable for my life of devotion, I accept. Anukula Paya. Oh, this is favorable, I go for it. Of course, if it is not favorable, I kick that out, I throw that away. Prati divase. On every day, I lead my life. I follow all these different things. And Parama Sukhe, I experience Param Sukh, supreme happiness. Svikara karayetaha, as I accept different items which are favorable for my devotional service, life of devotion, I accept. I remain absorbed, stay busy, performing those activities, and I am a happiest person around. Hari Hari. Srila Bhaktivinoda Thakur Mahashaya ki, and then his song Ki Jai, Shuddha Bhakata Charana Renu. So please keep singing this song with understanding of the song, the meaning of the song. And may you all attain perfection in your life by singing this song and implementing, executing different items mentioned in this song. Hari Hari. Krishna Balarama ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Damodar Maas ki jai. Ekadasi Mahotsava ki jai. Gaur Premanande. Hari Hari Bo. Yes, Hare Krishna, Guru Maharaj, Danvat Pranam. All the devotees, please accept my humble obeisances. So thank you so much, Guru Maharaj, for such a wonderful talk. Haribo. Hare Krishna. Am I audible, Guru Maharaj? Thank you so much, Guru Maharaj. Guru Maharaj, you have given such a wonderful talk today on what's the importance of Ekadashi, what we shall do on Ekadashi. So now we have for this EKΑDAŠī Śravana-kīrtana, we have our second speaker, and that is Sarvabhaum Prabhu. So Sarvabhaum Prabhu, we all know who Sarvabhaum Prabhu is. So he is again a Brajavasi. So this is the month of Kartik when we all try to reside in Vrindavan. Sarvabhaum Prabhu is
he's a Pakka Brajavasi. He stays in Sri Vrindavan Dham. So able to go to Braj. So by the mercy of Srila Prabhupada and his disciples, if Braj is coming to us, so every day we are attending Braj Mandal Parikrama, and today on this most auspicious Rama, we have the devotees from Vrindavan. They are coming and giving us Braj. So Now, a few minutes, you are not required to. So Sarvabhaum Prabhu will give a talk on Damodar Ashtakam today. So we all sing this beautiful these 8 verses every day, but yeah, sometimes we read the translation of it, what exactly it means. Sometimes we don't read, but today we will come to know what exactly this Damodar Ashtakam is, what glorifications are there, and that too by a very pure devotee. So we heard today itself in the song of Bhakti Vinod Thakur that we should hear from a devotee of the Lord. Gaur Amar je sab sthane karai brahman range se sab sthane heribo ami pranai bhakat sange. So in the same manner, when it comes to hear, we should hear from a very pure devotee or a devotee of the Lord. So today we have His Grace Sarvabhaum Prabhu, who will be giving a very beautiful talk on Damodar Ashtakam. Prabhuji will be joining in few minutes. So I'll just take few more minutes to introduce His Grace Sarvabhaum Prabhu so that we all know from whom we will be speaking today. So Sarvabhaum Prabhu is a very senior devotee of ISKCON. He's a well-known preacher who preaches in all over India, Pakistan, and many other countries. So Sarvabhaum Prabhu was basically born in the Sindh Prant of Pakistan, and he was born in a Brahmin family in Pakistan. So he completed his MBBS from Karachi, and then he was working over there, and then he joined ISKCON, and from 1991 His Grace Sarvabhaum Prabhu shifted to India, to Vrindavan, and now he's based in Vrindavan, and he can be seen giving many beautiful lectures and many beautiful classes on different topics for Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, and different pastimes of the Lord as well. So he's a very well-known preacher. He's a well-known teacher for Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, and other spiritual programs that we have. And we can see him in Vrindavan whenever we go. So Hare Krishna, Sarvabhaum Prabhu, please accept our humble obeisances. So on behalf of ISKCON Kirtan Ministry, we would like to welcome you in this wonderful program of EKΑΔAŠÍ Śravana Festival. So, as informed, His Grace Sarvabhaum Prabhuji will be giving a talk today on Damodar Ashtakam. So, Prabhuji is currently Prabhuji is in Sri Vrindavan Dham. So directly from Vrindavan, Prabhuji is giving us Vrindavan. So we will be hearing directly from Sri Vrindavan Dham today. So as informed. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Haribol, thank you very much, Hare Krishna, Prabhu. Kirtan Ministry, devotees, thank you very much for giving me opportunity
to speak something in a holy Damodar month about the Damodar's glories. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vranda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So सब साधनों में भक्ति महान है और भक्ति में कीर्तन महान है और कीर्तन में गुण कीर्तन है, रूप कीर्तन है, लीला कीर्तन है, नाम कीर्तन है। इन सब कीर्तनों में नाम कीर्तन महान है और नाम कीर्तन में भी भगवान के कुछ नाम हैं जो सामान्य अप्रत्यक्ष नाम है और कुछ नाम हैं जो विशेष नाम है। जैसे ईश्वर है, परमात्मा है, जगदीश है, ये जो है सेकेंडरी नेम्स हैं, परंतु जब दामोदर नाम लें तो ये विशेष भगवान स्वयं का नाम है। तो ये एक प्रकार का नाम कीर्तन है और इस नाम कीर्तन में कार्तिक मास में, जिसका श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं ऊर्जा व्रत, ऊर्जा व्रत में ऊर्जेश्वरी राधा, उसको प्रश्न करने से कृष्ण आकर्षित होते हैं। इसलिए इस दामोदर अष्टक जो सत्यव्रत मुनि ने पद्म पुराण में, ये सिद्ध स्तोत्र है। This is a perfect prayer, a completely perfected, realized सिद्ध, ये सिद्ध जो है अष्टक है जो सत्यव्रत मुनि के द्वारा पद्म पुराण में उल्लेख है और जिसको श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में दामोदर महीने में इसको गाने का हमारे लिए विधान रखा है। तो इस 8 श्लोकों का हम रसास्वादन करने का प्रयास करेंगे आज के सीमित समय में, क्योंकि जब हम अर्पण करते हैं दीप और दामोदर अष्टक गाते हैं तो इसके शब्दों का अर्थ अगर हमको समझ में आए और उस भाव को हम ग्रहण करें, if our consciousness is focused on the meaning of the words and the intention of the original speaker of the Ashtakam, so then we will have more relishment and fulfillment of the singing. तो आइए पहला श्लोक के भाव का रसास्वादन करते हैं। नामामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुल भाजमानम यशोदाभियोलोकलादधावमानम परामृष्टम अत्यंत दुत्य गोप्या। पहला शब्द जो नमामि है ये मंगलाचरण है। सनातन गोस्वामी पाद दिग्दर्शनी टीका में लिखते हैं नमामि का मतलब है प्रेम, श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान को प्रणाम करना, और ये प्रणाम मंगलाचरण का सूचक है कि हमारी
जो भगवान की प्रार्थना की भावना है वो शुद्ध भगवत प्रेममयी हो और बिना किसी बाधा के पूरी हो। ये मंगलाचरण का सूचक है नमामि। और ईश्वर शब्द के 3 अर्थ लिखे हैं श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने। ईश्वर शब्द के पहले अर्थ को लिखते हैं सर्वशक्तिमंत। ईश्वर नॉर्मली तो हम कहते हैं ईश्वर का मतलब जो सबका नियंता है, पर नियंता कौन होगा? जो सर्वशक्तिमंत होगा। तो सर्वशक्तिमंत सूचक करता है कि भगवान हमको भी शक्ति दीजिए कि हम आपकी सेवा में समर्थ हो। तो पहला है सर्वशक्तिमंत अर्थ ईश्वर का। दूसरा है जगत एक नाथ। जगत एक नाथ जो शब्द है, इससे सूचन है कि एकमात्र भगवान ही पूजनीय और आराध्य है, क्योंकि एकमात्र नाथ है और 2 3 4 5 नाथ नहीं है। जगत एकैक नाथ, जगत एक नाथ, ये भगवान की पूजा, भगवान पूजनीय है, एकमात्र उसका सूचक है। और तीसरा ईश्वर का अर्थ है निज निज प्रभु। भगवान मेरे व्यक्तिगत रूप स्वामी है, मैं उसका सेवक हूं। ये निज प्रभु जो है ये अपनी भक्ति का सूचक है। ये मेरी अपनी भक्ति भगवान की प्रति है, उसका सूचक है। तो ये 3 ईश्वर के अर्थ हैं। जब हम कहें तो भगवान हमें शक्ति दे कि हम उनकी से भक्ति कर सकें। एकमात्र भगवान पूजनीय है और कोई पूजनीय नहीं है। और तीसरा मेरा भगवान है, मेरा स्वामी है, मैं उसका सेवक हूं। ये सबके स्वामी है, परंतु मेरा अपना ये जो स्नेह है ये वास्तव में जो शांत भाव से ऊपर उठा के दास्य भाव में लाता है। दास्य भाव दास्य भाव की पहचान है भगवान में ममत्व, भगवान मेरा है। और इसके बाद सनातन गोस्वामी कहते हैं भगवान के तत्व का निरूपण करते हैं कि किसको प्रणाम कर रहे हो, कौन है वो? कहते सच्चित आनंद है, उनका रूप है सच्चित आनंद, सदा रहने वाला है, ज्ञान का भंडार है, आनंद का सागर है। ये भगवान के तत्व का वर्णन है। और इस तत्व के वर्णन के रूप के बाद भगवान का रूप विशेष का वर्णन करते हैं। यह है तत्व के रूप का वर्णन। अब रूप विशेष के वर्णन में भगवान के मुख में और दर्शन में जो कुंडल है, कानों में मकर आकार के जो कुंडल हैं, उन कुंडलों का दर्शन हो रहा है, उसका वर्णन कर रहे हैं। नमामि ईश्वरम सच्चिदान लसत कुंडलम। लसत कुंडल भगवान के विशेष रूप का वर्णन है। कुंडल भगवान के कानों में है, परंतु गालों के ऊपर जब झूमते हैं तो गालों को चूमते हैं। तो ये आभूषणों सब में सर्व उच्च सर्व आनंदमय आभूषण है, जो भगवान के गालों को चूमने का सौभाग्य प्राप्त करता है। क्योंकि भाव आगे आएगा, मुह चुम्बितम, तो आपके मुख को चुंबन करती है यशोदा मैया, गोपियां। ये कुंडल कितना सौभाग्य है, हर समय भगवान के गालों का चुंबन करता है। जो मकर आकार का कुंडल है। और मुहुः चुम्बितः, यहाँ है चुंबितम के साथ शब्द क्या लिखा है? लसत कुंडलम। लसत कुंडलम, लसत का मतलब है चमकना। तो ये क्या कुंडल चमक रहा है अपनी प्रकाश से? बोला नहीं,
भगवान का विग्रह इतना मधुर है, इतना सुंदर है, इतना आकर्षक है, इतना प्रकाशक है कि जो आभूषण भगवान को पहनाए जाते हैं वो आभूषण ही चमकने लग जाते हैं। हम आभूषण पहनते हैं हमने हमारी सुंदरता बढ़ाने के लिए, परंतु भगवान का आभूषण भगवान के श्री विग्रह के प्रकाश से प्रकाशित होके सुशोभित होता है। ये उद्धव जी कहते हैं भागवत में कि भूषण का भूषण है श्री कृष्ण का विग्रह। तो ये जो आभूषण है ये चमक रहा है क्योंकि भगवान चमक रहा है। भगवान की चमक की क्या बात करें, जिनके विग्रह से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है, जिस ब्रह्म ज्योति के प्रकाश से सूर्य चंद्रमा प्रकाश लेते हैं, तो वो ज्योति के ऊपर वो जो कुंडल होगा कितना चमकता होगा उस ज्योति के तेज से। तो कुंडल के तेज से नहीं परंतु भगवान के तेज से आभूषण चमक रहे ना। आभूषण इतने, गोपियों के घर में जब माखन चोरी करने जाते थे, गोपी कहती है हमने अंधेरे कमरे में दही दूध मक्खन को छुपा के रखा है हमारे पति के लिए, पुत्र के लिए। ये तुम्हारा बेटा अंधेरे कमरे में जाता है, इनके आभूषण चमकने लगते हैं और सब चीजों को ढूंढ के निकाल लेता है। तो यशोदा मैया ने कहा फिर क्या ये आभूषण उतार दें तो इसके तो अंधेरा रहेगा? बोला नहीं, ये आभूषण इसके ऊपर सुंदर लगते हैं। ये आभूषण से सुंदर लगता है ऐसे नहीं, आभूषण इसके ऊपर सुंदर लगते हैं। तो फिर कुंडलों का वर्णन करके फिर स्थान का वर्णन करते हैं। भगवान के रूप विशेष के बाद स्थान विशेष का वर्णन करते हैं। गोकुले भ्राजमानम, ऐसा भगवान आपको कहाँ मिलेगा? बोला गोकुल में मिलेगा। गोकुल किसको कहते हैं? गौ गोप गोपी अलंकृत गोकुलम। गोकुल किसको कहते हैं? जहाँ गाय हो, जहाँ गोप हो, जहाँ गोपियां हो, जो गाय के बछड़े हो, उसको कहते हैं गोकुल। और भ्राजमानम का अर्थ है वहां चमक रहा है। वहां भगवान अपनी मधुर लीलाओं के द्वारा आनंद से प्रकाशित है। गोकुल भ्राजमानम तो स्थान है कि ये लीलाएं कहाँ देखने को। फिर लीला विशेष का वर्णन कर रहे हैं। तत्व का वर्णन हो गया, रूप विशेष का वर्णन हो गया, स्थान विशेष का वर्णन हो गया, अब लीला विशेष का वर्णन कर रहे हैं। यशोदा भी उलूखलाद धावमानम, ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय की जो दामोदर लीला है उसका वर्णन है। यशोदा के भय से आश्चर्य है, ऊपर ईश्वर है जिसको नमस्कार करते हैं, सच्चिदानंद है। और तीसरी लाइन कहती है यशोदा के भय से भाग रहा है। यशोदा शब्द का अर्थ है जो दूसरों को यश दे। और मैया यशोदा ने ऐसा एक कृष्ण को यश दिया है, ऐसा कृष्ण को यश दिया है कि ये दामोदर नाम यशोदा ने कृष्ण को दिया। नहीं तो वेदों में दामोदर नाम नहीं है। अब दामोदर रस्सी से बंधा हुआ भगवान कोई भगवान है क्या? एक गांव के रास्ते में जाते हुए एक जगह पे एक साधु रहता था। बहुत सरल साधु था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आते जाते संतों की सेवा करता था, जलपान पिलाता था, फल फूल ला के देता था, रोटी पका के दे देता था। तो एक महात्मा वहां से गुजरा, उसने कहा अच्छी सेवा करते हो, कुछ नाम जप लिया करो। बोला मुझे तो नाम आता नहीं है, पढ़ा लिखा हूं नहीं। तो बोला सीताराम सीताराम जपा करो। ये बेचारा समझ नहीं पाया क्योंकि साधु जिसने कहा वो उसकी जबान थोड़ी लड़खड़ाई, तो वो सीताराम समझा नहीं। अब उसने जपना शुरू किया, घसीटाराम 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 घसीटाराम। अब ये जप करे घसीटाराम घसीटाराम घसीटाराम। एक दूसरा साधु वहां से गुजरा, इसको देखा ये घसीटाराम कह रहा है, वो क्रोधित हो गया। बोला महाराज ऐसा भगवान का नाम लेते हैं, सीताराम को घसीटाराम क्यों बोल रहे हो? उसने बोला मुझे पता नहीं है, मेरे को साधु ने कहा था सीताराम, मैं समझा नहीं क्या सीताराम घसीटाराम। तब तक आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा ये मेरा नाम ले रहा है, मैं ही घसीटाराम हूं।
मेरी माँ ने उखल में बांधा था तो उखल को घसीट के मैं ले गया था, ये असली नाम है। ये जो नाम मेरा ले रहा है ये है वाकई मेरा नाम, मैं हूँ घसीटा राम। ओ मैं घसीट के उखल तो ले ही गया था मैया ने जब बांधा था। तो ये ऐसी महिमा भगवान को यशोदा मैया ने दी है। उसके भय से ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है भक्त वश्यता, भगवान अपने भक्तों के बस में आ जाते। आगे वाले श्लोक में हम देखेंगे कि गोपी के प्रेम से बंध गया, रस्सी से नहीं बंध गया। तो वात्सल्य प्रेम की परिकाष्ठा की लीला है ये, और भगवान भक्त वश्यत्व, भक्त के बस में आ जाते हैं, इज कंट्रोल्ड बाय हिज डिवोटीज। इसका सूचक है यशोदा भीयू। अब उखल से कूद के भाग रहे हैं, ये है दामोदर मटका फोड़ने वाली लीला का सूचक। और फिर यशोदा उसको पकड़ने के लिए भाग रही है। उखल में कहाँ बैठा था? तो पूरी लीला कहते हैं कि दिवाली का दिन था। यशोदा मैया ने सारी दासियों को दूसरे काम में लगा दिया था। दूसरे दिन इंद्र की पूजा का मुख्य दिन था। मैया ने कहा रोज गोपियां शिकायत करती हैं कि दूसरे के घर में माखन खाने जाता है। हो सकता है ये दासियां कहीं दूध को जला दें या प्रेम से नहीं सेवा करती हों। आज मैं स्वयं माखन निकाल के लाला को खिलाऊंगी, फिर देखूं किसी के घर कैसे जाता है। तो पदम गंधा गाय कुछ जो घर की गौशाला में बांधी हुई थी, जिनके दूध में सुगंध थी और जिसको विशेष दूध और घास खिलाया जाता था, मैया ने रात को दूध गर्म किया प्रेम से और फिर जमाया और सुबह सवेरे उठ के स्नान करके और पीले रंग के अलसी के पुष्प से बना हुआ नान हिंसिक रेशम की साड़ी पहनी, क्योंकि रेशम के वास्तव असली रेशम के वस्त्रों को दोष नहीं लगता है भगवान की सेवा में काम करने में। और फिर कमर के ऊपर कस के पंटा पट्टा बांधा, क्योंकि खींचने का बहुत मेहनत का काम करना है। सुत्तर निधम। और फिर मैया ने अपने पुत्र के स्नेह से आगे दही का मटका रखा और मूड़े के ऊपर बैठ के मंथन करने का प्रयास करने लगी। तो हाथों से जो खींचने का परिश्रम हो रहा था, कंगन बज रहे थे और मंथन का आवाज धड़म धड़ा धड़म धड़ा आ रहा था। और मैया के कुंडल गालों के ऊपर हिल रहे थे और काले बादल जैसे बालों से पसीने की बूंदें और जो पुष्प डाले हुए थे चंबेली के जूही के जैस्मिन के, वो नीचे गिर रहे थे। और पुत्र के स्नेह से स्तन से दूध चू के बाहर कुचकी में लग रहा था। ये जब कर रही थी मंथन, तो मैया नंद गहनी है, नंद के घर में आनंद फैलाने वाली है। और जब मंथन कर रही थी तो कृष्ण की बाल लीलाओं को और चरित्र को गा रही थी और मन से कृष्ण का चिंतन कर रही थी कि उठेगा तो आज मेरे हाथ का माखन खिलाऊंगी। तो भक्ति में इन 3 श्लोकों में 3 बार मंथन शब्द आया है। निर्मंथ मंथन। तो मंथन का अर्थ होता है साधन। भक्त जब साधन करता है तो साधन होता है 3 प्रकार से, शरीर से, मन से और वाणी से। शरीर से मैया दही मंथन का काम कर रही है, वाणी से भगवान के चरित्र को गा रही है और मन से कृष्ण का सुमरण कर रही है। ये है भक्ति। मन कर्म वचन तीनों से सेवा कर रही है। इसी को कहते हैं साधन। भक्ति हमारी इन तीनों से होती है, मन कर्म वचन से। ये मैया का दर्शन है। और प्रभुपाद जी ने लिखा है इस तात्पर्य में, अगर कोई वात्सल्य प्रेम का भक्त है तो यशोदा मैया का दर्शन करो। कैसे वस्त्र पहनती है, कैसे सेवा करती है, इसके पीछे खड़े हो जाओ।
यशोदा बनने की मूर्खता के अनुयायी बन के उसके पीछे खड़े होके सेवा करोगे तो वात्सल्य प्रेम की राग भक्ति का शुभ आरंभ हो जाएगा। अब मैया जब ऐसे मंथन कर रही थी तो कन्हैया अपने पलंग पे सोया हुआ उठ के मैया मैया करते हुए बैठ गया, फिर नीचे उतरा और जहां से आवाज आ रही थी मंथन की, कन्हैया को लगा मेरा कोई कीर्तन कर रहा है, क्योंकि दही के मंथन से आवाज आ रहा था ध्रुम ध्रुम, और हाथों के कंगन का आवाज आ रहा था छम छम, और मैया के मुख से हो रहा था गोपाल जय जय गोविंद जय जय, कि पूतना हारी, पूतना का उद्धार करने वाला, आसक्ता सुर हारी आसक्ता। तो ये सुन के भगवान ने कहा, अरे मैंने नारद को कहा है कि जहां मेरा कीर्तन होता है वहां मैं प्रकट होता हूँ, मेरी माँ कीर्तन कर रही है और मैं सोया रहूं तो लोग विश्वास कैसे करेंगे। तो कन्हैया उठ के वहां आ गया जहां मैया कीर्तन कर रही। किसके ऊपर चढ़ के आया? बोला प्रेम के ऊपर चढ़ के आया। लिखा हुआ है दूसरे श्लोक में, प्रेम आवाहन, वाहन, वाहन जो शब्द होता है ना, प्रेम के वाहन के ऊपर चढ़ के आया, माता के वात्सल्य प्रेम से खींच के आ गया। आया तो सही, देखा कि मैया दही मंथन कर रही है, आंखें बंद हैं, पूरे एब्जॉर्प्शन के साथ, पूरे ध्यान के साथ आंखें बंद करके सुमरण कर रही है, कीर्तन कर रही है और दही मंथन कर रही है। कन्हैया ने कहा कर रही है मेरा मंथन, मैं खड़ा हूं सामने, मुझे नहीं देख रही है। तो कन्हैया ने सोचा और अपने हाथ से मंथनी को पकड़ लिया, काम रुक गया, निषेधित। और मैया ने आंखें खोली और मैया मुस्कुराई। मैया मुस्कुराई क्यों? मैया मुस्कुराई कि कितना बड़ा शक्तिशाली हो गया है मेरा लाला, और कितना बुद्धिमान है, मेरे को अपनी ओर आकर्षण करने के लिए मेरे काम को रोक दिया। मैया मुस्कुराई तो कन्हैया ने क्या करा, आरोह्य अंकम, अपने आप मां की गोद में चढ़ गया, बैठी हुई मां के घुटने को पकड़ के और गोद में चढ़ गया। अब कन्हैया में और यशोदा में प्रतिशोध शुरू हो गया, कंपटीशन शुरू हो गई। क्या कंपटीशन शुरू हुई? कन्हैया कहता है मैया मैं आपका दूध पीऊंगा, और मैया कहती है मेरे हाथ का मक्खन खिलाऊंगा। कन्हैया कहता है नहीं नहीं मैं आपका दूध पीऊंगा, नहीं आपको मक्खन खाना पड़ेगा। लेकिन यहां कन्हैया जीत गया। वो जैसे अंक में चढ़ा और मुस्कुराया, मैया ने कहा बेचारे को भूख लगी है, अपना स्तन उसके मुख में दे दिया। कृष्ण मुस्कुराया, मैया ने मुख में अपना स्तन दे दिया, और फिर दूध अपने आप आने लगा। दूध के लिए कृष्ण को चूसने की प्रयास नहीं करना पड़ा, क्योंकि प्रेम इतना था, दूध बह के आ रहा था। तो मैया ने कृष्ण ने मुस्कुराहट दी और मैया ने दूध दिया, और माँ और बेटे में ये बहुत बड़ा प्रेम का एक आदान प्रदान शुरू हो गया। इससे एक बहुत अच्छा शिक्षा मिलती है कि बच्चा कहे मैं भूखा हूं छोटा, तो 100 काम छोड़ के मैया को, बच्चे को प्रेम से खिलाना चाहिए। अब कार्तिक के दिवाली का दिन है, ठंडी का दिन है, मक्खन नहीं निकला तो निकलेगा भी नहीं, लेकिन मैया ने मक्खन के ऊपर कपड़ा ढक दिया, अब ये मक्खन नहीं निकलेगा। अपने बेटे को प्रेम से दूध पिलाना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी शिक्षा है माताओं के लिए कि बालक कहे कि मैं भूखा हूं तो 100 काम छोड़ के उसको खिलाना चाहिए या दूध पिलाना चाहिए। और ये हमारा प्राय एक उदाहरण होता है कि माँ और बच्चे में जो संबंध शुरू होता है वो होता है दूध पिलाने से। ऐसा संबंध होता है कि 1000 स्त्रियों में बच्चा अपनी माँ के मुंह को पहचानता है, और 1000 बच्चों में माँ अपने बच्चे के रोने को पहचानती है।
ये संबंध दूध पिलाने वाले को, जिस माँ ने दूध पिलाया है उसी से बच्चे का होता है, वाले को ये संबंध नहीं हो सकता है। ये माँ दूध क्या पिलाती है बच्चे को, सारे संस्कार देती है, सारे परंपरा के संस्कार देती है, कुल के संस्कार देती है, और बहुत कुछ जीव को, डॉक्टरों को डॉक्टरी के विचार से कहे तो सारी इम्यूनिटी देती है, सारा पोषण उसके अंदर से आता है, तो संस्कृति देती है, पोषण देती है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है माँ बेटे के दूध पिलाने के संबंध का। कहती थी बेटा मेरी दूध की लाज रखना, और बेटा भी कहता था माँ तेरे दूध का कर्ज चुकाऊंगा। अब जो माँ दूध पिलाती नहीं है बच्चों को, वो कैसे कहेगी मेरे दूध की लाज रखना, और कैसे बच्चा कहेगा कि मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा। वो ऐसा ही एक बेटा है जिसने कहा माँ तेरे दूध का कर्ज चुकाऊंगा, दूध तो पिलाया नहीं था, तो मैया ने कहा दूध वाले का कर्ज चुका दे बेटा, दूध वाले का कर्ज ज्यादा हो गया है। सो ये बहुत बड़ा विज्ञान है इससे। और कृष्ण की उम्र कितनी है जब ये दूध पी रहा है? 3.5 साल का है कृष्ण। 5 साल तक दूध पीते थे बच्चे। वो ऐसी माँ को जो 5 साल तक दूध पिलाती है उसको पद्मिनी कहते हैं। ये बच्चे दूध पिलाती और बच्चे दूध पीते हैं, और ऐसा संबंध बच्चे और माँ में होता है। ये तो हम हंसने के लिए कभी सबको सुनाते हैं, लेकिन बहुत पुराना संदेश है हमारा ये। अगर आजकल मैया जो दूध बच्चों को नहीं पिलाती है, बोतल से दूध पिलाती है, वो सावधान हो जाएं। बच्चे का संबंध दो बोतल से हो जाएगा। वो बोतल को समझेगा यही मेरी माँ है, यही मेरा पोषण करने वाली है। वो बोतल से इतना प्रेम करने लगेगा कि 10-12 साल का होगा तो रोज हाथ में उसके कोको कोला की बोतल होगी। अरे ये क्या कर रहा है, क्यों पी रहा है? बोले यही तो मेरी माँ है, बचपन में इसने मेरे को पाला है, इससे मेरा प्रेम हो गया है। और 20 साल का होगा तब तो बियर की बोतल हाथ में होगी, का जानी वाकर की बोतल हाथ में होगी। अरे ये क्या कर रहा है मूर्ख? बोला मेरी माँ है। और 30-35 साल का होगा तब तक वो बीमार हो गए, अस्पताल में पड़ेगा, और ऊपर से ग्लूकोज की बोतल होगी, और उसको देखेगा अरे मेरी माँ इतनी ऊपर कहाँ चढ़ के बैठ गई है, और उसको देखते देखते बेचारा दुनिया से चल बसेगा। तो बोतल मत दो बच्चों को, नहीं तो न बोतल दो न चमचा दो। चमचो दोगे तो चमचा बनेगा, बोतल दोगे तो बोतल में अटकेगा अपने। अरे माँ तो एक है जिसका प्रेम पिघल के दूध बनता है। बच्चे से प्रेम करने वाले तो नाना चाचा दादा बहुत हैं, लेकिन दूध तो एक माँ का है जो प्रेम पिघल के दूध बनता है। इसलिए बच्चों को प्रेम से दूध पिलाना चाहिए। और बच्चा भूखा हो तो 100 काम छोड़ के बच्चे को खिलाना चाहिए। आजकल की माता टीवी पे बैठी है, बच्चा कहता है भूख लगेगी, कहता फ्रिज में से ले लो। फ्रिज खोलता है, अंदर से ठंडी हवा आती है, बोलता माँ ठंडी हो गई। अब माँ को मुझसे प्रेम नहीं रहेगा, कह रहा है ठंडा खाओ। और जो ठंडा खाता है बच्चा ना, वो फिर ठंडे मक्खन को खाएगा तो फिर वो ठंडा हो जाएगा। वो फिर स्नेह माँ बेटे में उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो अब माँ जब दूध पिला रही है, कन्हैया दूध पी रहा है, माँ और पुत्र के अंदर मुस्कुरा के एक दूसरे से रसास्वादन हो रहा है, तब अंगेठी के ऊपर चढ़ा हुआ दूध जो भी प्राकृत जगत का नहीं था, अप्राकृत जगत का था, देखा कि अरे मैया का दूध समाप्त नहीं होगा। और इस गोपाल के पेट में तो ब्रह्मांड है, कभी पेट भरेगा नहीं। मैं इतनी बड़ी तपस्या करके अग्नि के ऊपर कृष्ण के भोग्य बनने के लिए तपस्या कर रहा हूं। अरे मेरा जीवन व्यर्थ है, इससे तो मैं आत्महत्या करता हूं। कूद के आग में गिरने लगा।
यशोदा मैया ने दूध के गिरने का आवाज सुना तो कन्हैया से नजर हटी और दूध की तरफ नजर गई। और ये आप देखेंगे कृष्ण की बाल लीलाओं में, नजर हटी दुर्घटना घटी। हमारी नजर कृष्ण के ऊपर है तो कोई समस्या नहीं है, नजर कृष्ण से हटी और कहीं गई, दुर्घटना घटी। माँ की नजर दूध पे गई, कन्हैया को नीचे रख दिया। कन्हैया 6 दिन का था, पूतना खींच खींच के नीचे उतारना चाहती थी, नीचे रख नहीं पाई। और यहाँ 3.5 साल वाले के नीचे मैया पटक दिया और रख के और दौड़ती गई। सनातन गोस्वामी तो प्रश्न उठाता है कि गोद में उठा के क्यों नहीं ले गई? बच्चा था, गोद में लेके उठा के दूध के पास चली गई होती। बोला समझदार थी, दूध गर्म है, चूल्हे के ऊपर चढ़ा है, मैं बुझाऊंगी, कहीं बच्चे को दूध उफनता हुआ लग न जाए अथवा कुछ आंच ना आ जाए। बच्चे की सुरक्षा के लिए रख दी कि बच्चे को कहां आपके पास ले जाऊं, कैसे गोद में उठाया। लेकिन बच्चा तो कहता है मेरा पेट नहीं भरा, मैं क्षीर सागर को छोड़ के तेरा बेटा बना और तू 5 किलो 2 किलो दूध के लिए मेरे को नीचे पटक के चली गई। भगवान ने कहा, भगवान कहाँ रहता है? क्षीर सागर में रहता है। ये भी बड़ी एक हंसी की बात है। लक्ष्मी कहाँ से प्रकट हुई? क्षीर सागर से। और भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। तो इसका मतलब ससुराल में ही बैठे है ना। अच्छा, पार्वती का जन्म कहाँ हुआ, किससे हुआ? शंकर कैलाश से, हिमालय से। और कहाँ बैठे हैं शंकर जी? कैलाश में। तो सभी ससुराल में बैठे हुए, ससुराल के प्रेम में तो बड़े बड़े देव बैठे हुए। तो आजकल का व्यक्ति, कोई जा रहा था रास्ते में, कहीं एक जगह पे प्रणाम कर रहा था, हमने पूछा क्यों भाई, किसका ये मंदिर है? भगवान श्री कृष्ण गोपाल का मंदिर है, राधा कृष्ण? बोला नहीं है। बोला तो फिर ये भगवान परम वैष्णव शंकर जी का मंदिर है? बोला नहीं है। तो क्या दुर्गा देवी का मंदिर है? बोला नहीं है। अरे तो भाई प्रणाम कर रहे हो रोज, यहाँ से कौन है? बोला ये मेरा ससुराल का घर है, मेरे को तो टीवी बीवी सब यहीं से मिला है, मेरा तो यही मंदिर है। तो ये सारी दुनिया का मंदिर यही बना हुआ है। और ऐसे लोग कहते हैं कि हम अकेले थोड़ी हैं, भगवान विष्णु को देखो अभी भी क्षीर सागर में ससुराल में सोए हुए। भगवान शंकर को देखोगे अभी भी वो कैलाश पे ही रह रहे हैं। तो जहां से पुत्री हुई वहीं बैठे हुए हैं। तो इसलिए घबराने की बात नहीं। रसास्वादन का समय आपका 8 हो रहा है, पहला श्लोक ही पूरा नहीं हुआ है। मैया दूध उतारने गई, मैया ने दूध को उतारा, लेकिन मैया की भक्ति बहुत बड़ी है और भगवान को छोड़ के भगवान के भक्त की रक्षा करने गई। जो भगवान की सेवा में लगने वाली चीज है उसको पहले बचा लूंगी। भगवान वो मेरा है, कहाँ जाएगा? दूध मेरा है, मैं पिला लूंगी बाद में, बच्चा मेरा है, लेकिन ये दूध जो है ये भक्त है, इसको भगवान की सेवा में लगाना है। इसलिए महान भक्त है यशोदा। जो भक्त अधिक दयालु होता है और जो भक्त को भगवान की सेवा में लगाता है वो भगवान को अति प्रिय होता है। तो यशोदा तो एक भक्त को भगवान की सेवा के लिए सुरक्षित करने को चली गई थी। लेकिन कन्हैया ने कहा मैं मैया को दिखाऊं, मैं भूखा हूं और मेरे को पटक के नीचे चली गई है, कर दिखाता हूं इसको, क्या करूंगा। और एक पत्थर पड़ा था, कौन सा? मसाला पीसने वाला। उसको लिया और बड़ी बुद्धिमानी से अपने हाथ के कंगन को पकड़ा, आवाज ना हो। और जहां मटका भरा हुआ नीचे था वहां धड़ाम से मारा, आवाज भी नहीं हुआ, माँ को पता भी नहीं लगा। और सारा आधा मंथा हुआ दही बहे के नीचे निकला और कूदने लगा। आप पता लगेगा मैया को क्या कर दिया मैंने। और फिर डर लगा कि मैया पकड़ेगी तो मारेगी, इसलिए उसी दही के ऊपर से चल के गया और भगवान के पांव के निशान, अंकुश का और सब दिख रहा था। अब करना क्या चाहिए? मैया को बताना चाहिए मैं बहुत भूखा था, मैं इतना भूखा था कि तुमने मुझे नीचे छोड़ दिया। दूसरे कमरे में जाके जो 1 दिन पहले का मक्खन था ना, उसको उतार के खाने का ड्रामा करने लगा कि भूखा हूं, क्या कर सकता हूँ। मैया वापस लौट के आई और मटका फूटा देखा, हंसने लगी। अरे बड़ा चालाक है ये बच्चा, बड़ा शरारती हो गया है, अपने घर के चीजों को संभालना चाहिए, ये अभी से तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन फिर मैया को भय लगा
कि बच्चा डर के मारे कहीं जंगल में चला ना जाए अकेला वन में, तो फिर मैं कहाँ ढूंढूंगी इसको। सो मैया ढूंढने के लिए उन्हीं पांव के निशानों के सहारे जाने लगी। तो कन्हैया एक उखल था उसको उल्टा कर दिया, उखल को उल्टा कर दिया जिसमें अनाज कूटा जाता है, और उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, माखन उतार रहा है। तब तक कुछ का बंदर आए हैं। वैसे प्राय बंदर जब कृष्ण के घर में आता है, जब कृष्ण घर में माखन चुराते हैं तो बंदर एक वचन में शब्द होता है, एक वचन में बंदर शब्द होता है। जब गोपियों के घर में मक्खन चुराता है तो बहुवचन में होता है बंदर। तो कहते एक वचन में बंदर होता है तो हनुमान जी आते हैं, और बहुवचन में होता है तो बहुत सारे बंदर आते हैं। बंदरों से भगवान का स्नेह राम अवतार से है, तो अभी उनका ऋण उतार रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा लीला है उनका। हरे कृष्ण, ये उनकी बहुत बड़ी लीला है। सो मैया ने देखा उखल के ऊपर बैठा है, और उखल के ऊपर जो बैठा है मैया ने देखा तो मैया पीछे दबे पांव चलने लगी, और हाथ में बंदर और कौवे देखे। अब मैया और कृष्ण इतना होशियार है, माँ इसी का बेटा है ना, वो टेढ़ी आंख से पीछे देखा रहा, मैया पांव दबा के आ रही है, उखल से कूद के भागा। ये यहाँ पहला श्लोक पूरा होता है। परामृष्टम अत्यंत दुर्त्य गोप्या यशोदा भियो लोकला दधाव मानम। दौड़ने लगा यशोद उखल से कूद के, और ये मैया पीछे से दौड़ रही है और जाके पीछे से पकड़ा। इसकी और लीला है। अब जब दोबारा कभी समय मिलेगा एकादशी के दिन आपके साथ करेंगे इसकी बात। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? कुछ नेट का प्रॉब्लम था, हमारे को देर लग गई सारी। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने बहुत सुंदर तरीके से दामोदर अष्टकम का जो प्रथम श्लोक है आपने उसका विवरण हमें समझाया। So we are very thankful to His Grace Sarvabhaum Prabhuji for explaining this beautiful verse, the first verse of Damodar Ashtakam, in a very expert manner, so that we can contemplate, we can think, we can meditate upon this beautiful verse. So if anyone have any question, you can just write in the chat box, and Prabhuji is here, so he can answer. इस अष्टकम के ऊपर there is a commentary by Sanatana Goswami called Digdarshini commentary. So this has all the verses quoted from Bhagavatam. So I thought I can do a couple more verses, but the first verse and second verse are little more elaborate. Yeah. Hare Krishna. So thank you so much, Prabhu. In a very way you have explained this. So we are very grateful to you. Hare Krishna. Thank you. Thank you. For... Hare Krishna. So, Hare Krishna, Prabhuji. Yeah, thank you so much, Prabhu. So now our next speaker is again a resident of Vrindavan Dham. She is from Vrindavan. Her Grace Mahadevi Mataji. Mahadevi Mataji is a Prabhupada disciple, and she have been staying in Vrindavan from past couple of years, maybe from few decades. And today is the most auspicious Rama Ekadashi. So Mataji will be speaking on Rama Ekadashi from Sri Vrindavan Dham. So Harpo, can you see me okay? There's been a lot of technical difficulties this morning. Please accept my obeisances, dear devotees. Vanchakalpadubhishta kripasindhavyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So, yes, for the last 20 years in Vrindavan, we've had the opportunity to experience the various Kartiks that the ISKCON management and all the assembled devotees, there's many festivals during the Kartik. And of course, one of them is the 2 sacred Ekadasis. And of course, on the Ekadasi,
we chant 25 rounds, and Srila Prabhupada suggested that we try to increase our hearing and chanting, and if we can, to distribute a book, distribute Krishna consciousness, share Krishna consciousness with someone. And many times that can be in the form of reading together. Yesterday, we've started a Krishna book reading now in Srila Prabhupada's library every Sunday. So our group has been meeting every Sunday for about the last 2 months, and you're all invited. We pass the book around, and we don't talk, or no one's in charge. We just pass the Krishna book around. And it's very relishable reading Srila Prabhupada's books together out loud. So Prabhupada and the Lord can hear very nicely, and we can hear very nicely. So that's something that we can do today on this very, very sacred Rama EKādAŠī in Kartik, in Vrindavan. And as Srila Prabhupada mentioned many times, that wherever we are, we can be in Vrindavan according to our consciousness. We can, and also the Kirtan ministry has made it so accessible this year, where you can do the Vrajmandala Parikrama right on your, you can hear all the pastimes right on your phone, and be walking around and you're in Braj. It's so nice. This is the actual meaning of Prabhupada saying utility is the principle. So we have all these technical things, we can use them in the service of the Lord. I'm holding my phone, so I'm sorry if it's not so technically all set up over on this side, but anyway, we're going to do the best we can. That's all we can do. And we're going to proceed now to read the beautiful story of Rama EKādAŠī. Yudhisthira Maharaj said, O Janardhan, O protector of all beings, what is the name of the Ekadasi that comes during the dark fortnight, Krishna Paksha, of the month of Kartik, October-November? Please impart this sacred knowledge to me. The Supreme Lord, Sri Krishna, then spoke as follows. O Lion among kings, please listen as I narrate to you. The Ekadasi that occurs during the dark part of the month of Kartik is called Rama EKādAŠī. It is most auspicious, for it at once eradicates the greatest sins and awards one the passage to the spiritual abode. I shall now narrate to you its histories and glories. There once lived a famous king of the name Muchakunda, who was friendly to Lord Indra, the king of the heavenly planets, as well as with Yamaraj, Varuna, and Vibhishan, the pious brother of the demon. Who is Ravana's? Who was the brother of Vibhishan? Yes, Ravana. Muchakunda always spoke the truth and constantly rendered devotional service to me. Because he ruled according to religious principles, there was no disturbances in his kingdom. Muchakunda's daughter was named Chandrabhaga, after a sacred river, and the king gave her in marriage to Shobhana, the son of Chandrasena. One day, Shoshana visited his father-in-law's palace on the auspicious Ekadasi day. This visit made Shobhana's wife, Chandrabhaga, quite anxious, for she knew that her husband was physically very weak and unable to bear the austerity of a day-long fast. She said to him, "My father is very strict about following Ekadasi. On Dashami, the day before Ekadasi,
he strikes a large kettle drum, boom, and announces, "Nobody should eat on Ekadasi, the sacred day of Sri Hari." When Shobana heard the sound of the kettle drum, he said to his wife, "Oh, beautiful one, what am I to do now? Please tell me how I can save my life and obey your father's strictness and at the same time satisfy our guests." Chandrabhaga then spoke, "My dear husband, in my father's house nobody, not even the elephants or the horses, what to speak of consenting human beings, eats on Ekadasi. Indeed, none of the animals are given their ration of grains, leaves, or straw, or even water. This sacred day of Sri Hari on Ekadasi. So how can you escape fasting? My beloved husband, if you must eat something, then you should leave here at once. Now with firm conviction, decide on what you have to do." Prince Shobana then said, "I have decided to fast on the sacred Ekadasi day. Whatever my fate is, it will surely come to pass." Deciding this, Shobana attempted to fast on the Ekadasi, but he became unbearably disturbed with excessive hunger and thirst. I can't help but mention here that we're so fortunate, Srila Prabhupada, he many times mentioned that on Ekadasi, if we take on too much austerity and it disturbs our sadhana or disturbs our service, then we shouldn't do it. We should do what we're capable of doing and go through some little discomfort. Of course, a tapa always has some little physical discomfort, but not where it, as here it says, unbearably disturbed. We're very fortunate that Prabhupada has given us such a perfect process for us, and we just need to follow Prabhupada. Eventually, the sun set in the west, and the arrival of the auspicious night made all the Vaishnavas very happy. "O Yudhisthira, all the devotees enjoyed worshipping me, Sri Hari, and remaining awake all through the night. But Prince Shobana that night became absolutely unbearable. Indeed, when the sun rose on the Dwadasi, that Prince Shobana was dead. King Muchakunda observed his son-in-law's funeral, ordering a large stack of wood to be assembled for the fire, but he instructed his daughter Chandrabhaga not to join her husband on the funeral pyre. Another wonderful concession that Prabhupada has given. You wives don't have to jump into the fire with your husband. Thus, Chandrabhaga, after performing all the purificatory processes and procedures for honoring her deceased husband, continued to live in her father's house. Lord Sri Krishna continued, "O best of the kings," who is he speaking to? Yudhisthira, right. Even though Shobana died because of observing Ram Ekadasi, the merit that he accrued enabled him, after his death, to become the ruler of a kingdom high on the peak of Mandarachala mountain. This kingdom was like a city of the demigods, very lustrous, with unlimited jewels set in the walls of its buildings that gave off light. The pillars were made of rubies and gold, inlaid with diamonds that shone everywhere.
as King Shobana sat upon a throne beneath a pure white canopy, servants fanned him with yak-tail whisks. A stunning crown rested upon his head, beautiful earrings adorned his ears, a necklace graced his throat, and bejeweled armlets and bracelets encircled his arms. He was served by Gandharvas, the best of heavenly singers, and Apsaras, celestial dancers. Verily, he resembled a second Indra. One day, a Brahmin named Somasharma, who lived in Muchakunda's kingdom, happened upon Shobana's kingdom while traveling to various places of pilgrimage. The Brahmin saw Shobana in all his resplendent glory and thought he might be the son-in-law of his own King Muchakunda. When Shobana saw the Brahmin approaching, he immediately rose up from his seat and welcomed him. After Shobana had paid his respectful obeisances, he asked the Brahmin about his well-being and about the health and welfare of his father-in-law, his wife, and all the residents of the city. Prabhupada was very expert in diplomacy. Whenever he would meet someone, greet someone, he would offer them a seat, some water, and ask how they are. This is the etiquette of having someone in your home or meeting another Vaishnava. Somasharma then said, "O king, all the residents and subjects are well in your father-in-law's kingdom, and Chandrabhaga and your other family members are also quite well. Peace and prosperity reign throughout the kingdom. But there is one thing. I'm quite astonished to find you here. Please tell me about yourself. Nobody has ever seen such a beautiful city as this. Kindly tell me how you obtained it." King Shobana then began to tell his story. "Because I observed the Rama Ekadasi, I was given this splendid city to rule over. But for all of its grandeur, it is only temporary. I beg you to do something to correct this deficiency. You see, this is only an ephemeral city, a place of this material world. How may I make its beauties and glories permanent? Kindly reveal this to me by your instructions." The Brahmin then asked, "Why is this kingdom unstable, and how will it become stable? Please fully explain this to me, and I shall try to help you." Shobana then answered, "Because I fasted on the Rama Ekadasi without any faith, this kingdom is impermanent. Now, hear how it can become permanent. Please return to Chandrabhaga, the beautiful daughter of King Muchakunda, and tell her what you have seen and understood about this place and about me. Surely, if you, a pure-hearted Brahmin, tell her this, my city will soon become permanent." Thus the Brahmin returned to his city and related the entire episode to Chandrabhaga, who was both surprised and overjoyed to hear this news of her husband. She said, "O Brahmin, is this a dream you have seen, or is it actually a factual thing?" Somasharma the Brahmin replied, sorry for the phone going all over the place. I'm trying to hold it steady for you. Yes, so Sharma the Brahmin replied, "O princess, I have seen your late husband.
face to face in this wonderful kingdom, which resembles a realm of the denizens of heaven's playgrounds. But your former husband has asked me to relate to you that he says that his kingdom is unstable and could vanish into thin air at any moment. Therefore, he hopes you can find a way to make it permanent. Chandrabhaga then said, O sage among the Brahmins, please take me to that place where my husband resides at once, for I greatly desire to see him again. Surely I shall make his kingdom permanent with the merit that I have acquired by fasting on every Ekadasi throughout my life. Please reunite us at once again. It is said that one who reunites separated persons also obtains very great merit. The humble Brahmin Somasharma then led Chandrabhaga to Shobhana's effulgent kingdom. Amazing how he had that ability. Before reaching it, however, they stopped at the foot of Mount Mandarachala at the sacred ashram of Vamandev. Upon hearing their story, Vamadev chanted hymns from the Vedas and sprinkled holy water from his Samanya Arghya upon Chandrabhaga. By the influence of that great Rishi's rites, the merit she had accrued by fasting for so many Ekadasis made her body transcendental. Ecstatic, her eyes beaming in wonder, Chandrabhaga continued on her journey. When Shobhana saw his wife approaching him high on Mount Mandarachala, he was overwhelmed with joy and called out to her in great happiness and jubilation. This is how we are when we see our guru approaching. When we see our spiritual master, we get so happy, we get so joyful, don't we? After she arrived, he seated her on his left side, and she said to him, "Oh, dearest Pati Guru, please listen as I tell you something that will benefit you greatly. Since I was 8 years old, I have fasted regularly and with full faith on every Ekadasi. If I transfer to you all the merit I have accumulated, your kingdom will surely become permanent, and its prosperity will grow and grow until the coming of the great inundation." I was just hearing Prabhupada say yesterday on a lecture that in the spiritual world, 1 + 1 = 1 and 1 - 1 = 1. So there's no loss or diminution from any of the Ekadasis that we have observed in our years in practicing Krishna consciousness. And of course, practicing Ekadasi the way that Prabhupada has suggested is to fast from beans and grains, to chant our 25 rounds, go on Vrindavan Parikrama, distribute books, try to do some service for others, and be extra attentive to our sadhana today. And in this way, we accrue all this kind of merit as well. And we can even share that merit with someone else. We recently discussed in class that there's some verse in the Purana where if you offer a prayer, you offer a puja, a vrat, then not only does that person get the benefit, but you automatically, as the person who's offering that prayer or that vrat, you automatically get the benefit. So that's really nice. We can offer the merit of our Rama Ekadasi today for someone else who may be having a particular struggle in life, or someone else who needs a little bit of a spiritual boost.
So we can offer the merits of our Ekadasi today, and then we get the merit as well. Just see how merciful Srila Prabhupada and the previous acharyas are for giving us this kind of knowledge in a way that we can also apply. Lord Sri Krishna then continued to address, who is Lord Krishna speaking to? Yes, King Yudhisthira. Lord Krishna then continued to address Yudhisthira as follows. O Yudhisthira, in this way Chandrabhaga, who was beautifully decorated with the finest ornaments and had an exquisitely transcendental body, at last enjoyed peace and happiness with her husband. By the potency of Rama Ekadasi, Shobhana found his kingdom on the peaks of Mount Mandrachala, able to fulfill all his desires and bestow upon him everlasting happiness, just like that achieved from the transcendental Kamadhenu cow. Amazing. O greatest of kings, I have thus narrated to you the glories of Rama Ekadasi that falls in the dark fortnight of the month of Kartik. Anyone who observes sacred Ekadasi during both anyone who observes sacred Ekadasi during both the light and the dark fortnight of each month is undoubtedly freed from the reactions to the sin of killing a Brahmin. One should not differentiate between the Ekadasis of the light and dark parts of the month. As we have seen, both can award pleasure in this world and liberate even the most sinful and fallen souls. Just as black cows and white cows give equally good quality milk, so the Ekadasis of the dark fortnight, Krishna Paksha, and the light fortnight, Shukla or Gora Paksha, award the same high degree of merit and eventually liberate one from the repeated cycle of birth and death. Anyone who simply hears this narration of the glories of the sacred day of Rama Ekadasi is freed from all kinds of sin and attains the supreme abode of Lord Vishnu. Thus ends the narration for the glories of the sacred Kartik Krishna Ekadasi or Rama Ekadasi from the Brahma Vaivarta Purana of Srila Krishna Dvaipayana Veda Vyas. So I was just remembering a beautiful Prabhupada memory pastime where Krishna is telling Maharaj Yudhisthira that these Ekadasis eventually liberate one from the repeated cycle of birth and death. So one time, Prabhupada liked magic when he was a small boy. And so they invited a magician to come here, actually right here in Vrindavan in Prabhupada's quarters. And the magician was doing, all kinds of little simple magic tricks. But then he took a coin or something, the way I remember it. I wasn't there, but this story has been told many times. He took some coin from behind Prabhupada's ear, and that made the devotees feel, a little uncomfortable that Prabhupada was being used as as something in his magic trick. So then everyone was chuckling, Prabhupada was enjoying, but then Prabhupada became very grave, and he said to the magician, "So, can you deliver the fallen souls from birth, death, disease, and old age?" And the magician, who was very respectful, said, No, Swamiji. And Prabhupada said, I can. I can. So we're very fortunate that
even though these different Vedic rituals are there that have been practiced for thousands of years ago, Prabhupada has given us this process in such a simple and such a relishable way that we are every day being liberated from the threefold miseries, from birth, death, disease, and old age, simply by following this process, reading Srila Prabhupada's books every day. Every day we should try to find at least an hour if we can. I remember in the old days when we were traveling in vans, there were 24 of us ladies on a traveling Sankirtan party, and we were sleeping 6 sleeping bags in a van and going everywhere to distribute books and living in the van, doing our puja in the van, and we'd find some place to bathe, some campground, or we'd sneak into some college dorm. It was really like the wild, wild west. And when I think back on those days, of course it had to be Prabhupada's presence on the planet that empowered us. So, and we never felt, even during all those years, 7 years, I spent doing that. And Prabhupada helped us to be so bold, so fearless. He was fearless, and he was very proud of his American boys and girls, giving their life to establishing these different centers in America and around the world, especially in America, since it was, so new then. But my point in bringing that up was, I almost forgot my point, was that Prabhupada, even when he was on the planet, but even Lord Chaitanya, when he was on the planet, it was noted historically, it has been noted historically, that there was a great renaissance in the art world. Many great artists and musicians were creating so many beautiful works of art because of the presence of Lord Chaitanya on the planet at that time. So at the same time, Srila Prabhupada, when he was physically amongst us, he was inundating the world with a transcendental, divine Shakti that all of us, even those of us who didn't get to see Srila Prabhupada, we are also infused with this Shakti. I saw Prabhupada 3 times, and it was very wonderful. And one time we were some things had been happening on the New Vrindavan party, and we were all a little bit upset, you might say, and confused. And I remember thinking at one time, oh no, I don't know if I can keep going on. And we were all lined up to get a cookie from Srila Prabhupada. And when it was my turn, my eyes were just filled with tears, and in my heart, I was thinking, Prabhupada, I never want to leave you, but I just don't know if I can continue on with all these austerities. And so from within my heart, I distinctly heard Prabhupada say, I am always with you, do not be fearful. And those 2 sentences have carried me, and they can carry all of us. As soon as we connect ourselves to Srila Prabhupada, especially what he's written in his books, he himself has said that he didn't write these books, that Krishna, through him, has given him the words and the purports to write in his books. And Krishna is present in his holy name, and so is Srila Prabhupada. When we chant the Hare Krishna Maha Mantra, let's chant it together with heart. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Each syllable, there's 32 syllables in the Hare Krishna Maha Mantra, right? 16 names. And when we chant these different syllables, we can give extra attention to each har, to each re, to each ra, to each ma, to each krish, to each la, and
be more and more attentive, especially today on this sacred day of Ekadasi. We can really tune in to our rounds and try to tune in to each mantra. Make an effort to not be around others when we're chanting. Sometimes that can be distracting. You know, we have the different kinds of japa, right? In the old days, we had gibber japa, you know, where you're talking to someone and chanting, or we had dive bomber japa, we're sleeping and chanting. Today, we have Facebook japa or internet japa. So if we can just give our, and I'm guilty of all of those, by the way, but I'm trying to be more attentive. If we can be more attentive to listening, really hearing the holy name and feeling, try to feel that Krishna and Prabhupada's presence is with us, it becomes, the holy name becomes like a dear friend. You know, Prabhupada was just saying, I try to hear Prabhupada lectures every day. I highly encourage you to hear Prabhupada speaking. During this Kartik, you can hear these Nectar of Devotion classes. There's about 28 of them. And Prabhupada is actually, it's during Kartik in 1972. And Prabhupada is giving these Nectar of Devotion classes in front of Rupa Goswami. And very, very nice. And they've all been recorded. And Prabhupada mentioned so many times that Krishna and his name are the same. Now, of course, we've heard this also through the decades. We've heard this. But if we can try to really feel this, that Krishna is with us. And Prabhupada was just saying in a class that suppose you had a friend. Suppose you had a friend who was always there for you, who always provided everything, who, you know, gave you incredible, perfect advice. Of course, we know there is no human being that can give us that, whether a wife, or husband, or mother, father. Only the Guru and Krishna can give us that kind of perfect friendship, you might say. Whenever we're feeling disturbed, I have a Bhagavad Gita right by my door, and I go there and I open it up every day randomly, and Krishna will give you a perfect advice for whatever your situation may be that day. And in the holy names of Krishna, we actually find a friend, a dearmost friend, and we round 1, 2, 3, and hopefully by the time we get to 4, 5, and 6, we're developing a rhythm with our breath and with chanting each of the syllables and being mindful of our environment. Am I in an environment that's conducive for attentive chanting, or could I maybe move away? Because of course during Kartik there's so much going on. So, you know, and in your temple as well, and possibly in your home you have visitors, so you have to find an environment, a place where you're really going to spend time with your special friend. So, let's see what time it is. Oh, my goodness, I've gone over. Well, till we meet again, my dear friends, and please excuse any mistakes or all this technical moving around. And I wish you a wonderful, wonderful Ekadasi. And if you come to Vrindavan, come and join us for Krishna book reading every Sunday in Prabhupada's library. Please accept my obeisances. Vancha kalpatarubhyascha, kripa sindhubhyeva cha, patitanam pavanebhyo. Vaishya